हेलो हेलो सुनील सर। हेलो। हाँ जी। ओके सर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं और बाकी जो लोग जी जी सर। हेलो जी। Okay, everyone will have to wait a little, just a little, because of some technical issues. So that's a part of this internet. So we'll be going very soon to Sunil sir, and he'll continue. कुछ चीजें, let me ask you a few things. Maybe you'll be able to answer my questions. Okay, so अच्छा ये बताओ, इसमें से अभी करंट जो नेस्ट था उसमें कोई जो फाइनलिस्ट थे, कौन था यहाँ पे फाइनलिस्ट? जो ने वन, कोई एक स्टूडेंट बताओ जो फाइनलिस्ट था नेस्ट का। नेस्ट लास्ट ईयर। हाँ, चयनिका। हाँ, चयनिका। Okay, good. Chainika, let me ask you a question. Will you answer? Yes, ma'am. Okay, Chainika. Acha, Chainika, you must be sitting in a room, abhi, huh? You must be sitting in a room, and you know that there is air in the room, isn't it? There's air in the room. Can you guess? Can you guess what is the weight of the air in your room? Can you guess? I mean, and the others also can give their guesses quickly. Can we guess the amount of air which is there? It's a quick guess.
ज्यादा कैलकुलेशन Ma'am, करने की 100 जरूरत। grams. 100 gram. Okay. Can I have more inputs? जल्दी से बताना। 10 kilos. 10 kilos. Okay. और बताओ। मैम मेरा कमरा छोटा है थोड़ा। अच्छा ठीक है ना, तुमने बोला 100 ग्राम, उसने बोला 10 किलो। ओके अनुराग, हाँ, someone else was also saying, बोलो। Doubt in this that हाँ, the how room much? is that room there is a Your voice is there is breaking. Aryan, your voice is breaking. Anyone else, can you quickly give me an answer? And Aryan, आपका बात हम सुनते हैं, but your voice right now is breaking. So, can anyone else give me that answer? Quickly. Okay, I got an answer of 31 kg. Okay, and yeah, you can consider exchange of air. Yes, I can read what you're writing. और बताइए. I just want some. Okay, 50 kg exchanging. Fine. और बताओ. Ma'am, it's not 100 grams. I calculated wrong. अच्छा, चयनिका ने calculate कर लिया. Okay, now let me change my question and let me ask you, what is the volume of the room in which you are sitting? Approximately batao, what's the volume of the room? Think about the height. Yes, Think about ma'am. the length and the breadth of the room. अब बताओ कि what's the 6 meter cube? No, ma'am, अच्छा, it's like 2 into Shreya 5 into is 3. saying 6 meter cube. Acha, someone else is saying 216 cubic meters. No, Okay. ma'am, not that. Ritesh, and that can vary. 125 meter cube. Okay. Now, again, let me ask you the same question. अब बताओ, जो बोल रहे थे 10 kg, 50 kg, 30 kg, 100 gram, do you change your answers? Would you like to change your answers? Yes, ma'am. बोलो चैनिका. Yes, तुम्हारे ma'am. रूम का वॉल्यूम पहले बताओ. Ma'am, 2 into 3 into 5 है, so 30 approx, 30 meters. 2 into 3. अच्छा, वाकई छोटा रूम है तुम्हारा तो. 2 into 3 into 5. Okay, fine. So तुम्हारा तो 30 meter cube का रूम हो गया. So how much would be the weight of the air in your room? 30 kg. 30 kg weight. Okay. So 100 grams से नहीं है, 10 kg भी नहीं है. And how did you arrive at that? अब जल्दी से बताओ चैनिका. Ma'am, 1 gram per liter अगर consider करे तो It's easier to do it 1 kg per meter cube approximately. Yes, ma'am. So you can do that, and then we can arrive at that. So it's interesting to note that we are sitting in a room which has, agar bada room hai, some of them are saying some 200 meter cube. That means you are surrounded by air which has a weight of about 200 kg weight, kahin 100 kg weight, and we don't even feel it. Isn't that interesting? Yes, ma'am. It's like it's not even there. Yeah. Yeah, that's quite interesting. So think about it sometimes. And now think about what is it that is balancing that weight of the air? Why does it not fall down? Why does the entire air 200 kg ho, ya 100 kg ho, ya 30 kg ho? What is balancing that air in the room? I'm not talking your body. Just consider the entire air in the room, and if you consider that entire air in the room, it's 100 kg. Because of air. internal energy of the gas. That's I'm considering the entire air to be a system.
If the entire air is a system, then the internal things, that becomes the internal forces. They cannot balance it, na? You need to have some external force to balance this. So where Not the is that normal coming? forces. हाँ बताओ कहाँ से आ रहा है normal force? मैम सीलिंग फ्लोर वगैरह से. अच्छा सीलिंग से आया, फ्लोर से आया, अगर वो इक्वल है तो वो तो आपस में कैंसिल हो गया. फिर कौन बैलेंस करेगा? थोड़ा सा और सोचोगे तो शायद पता चल जाएगा. Weight of the air is acting what? It is acting downwards. So normal reaction from the ground क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए as compared to the ceiling? ज़्यादा होना चाहिए. Yes. And that is the reason why, और इसी से you can also consider the fact that as you go up, the pressure of the air also, would, what happens to the air? The pressure as you go up, it decreases, right? Decrease. Decrease. तो जितना pressure सीलिंग की एयर लगा रही है सीलिंग के ऊपर, वही नॉर्मल रिएक्शन है, और वो थोड़ा कम लगा रही है, और नीचे वाला जो है वो ज्यादा लगा रही है. So, isn't that interesting? Okay, Yes, ma'am. Sunil sir is with us now. So he'll be taking us to a very new world. Vimal ji, over to you. Okay. Yes, ma'am. Okay, so apologies for the delay. There was some technical issue. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So good evening, everyone, and welcome to today's NAEST webinar on total internal reflection and its applications. This webinar basically organized by Shiksha Sopan, Indian Association of Physics Teacher, IAPT, and National Anveshika Network of India, NANI. I am honored to introduce our distinguished speaker, Dr. S.K. Khijwania, a renowned professor in the Department of Physics at Indian Institute of Technology, Guwahati. Total internal reflection is a fascinating phenomenon in optics where light is totally reflected back into a medium when it encounters a boundary with a medium of lower refractive index at an angle greater than the critical angle. This effect has many practical applications in modern technology, including optical fibers, prism, lenses, and mirrors. These applications have revolutionized the field of communication and have played a crucial role in our daily lives. Dr. Khizwania is an expert in the field of optics, over 30 years of experience in teaching and research. His research interest includes nonlinear optics, fiber optics, and optoelectronics. He has published over 150 research papers in international journals and has been recognized with numerous awards and honors for his contributions to the field. In today's webinar, Dr. Khizwania will share his insights and knowledge on total internal reflection and its applications, including how TIR can be used to create optical fiber over communication, prism for spectroscopy, and lenses for imaging. He will also discuss the practical challenges faced in these applications and the latest advancement in the field. I'm confident that this webinar will be informative and engaging. And I encourage you all to actively participate in the discussion and ask questions. Once again, welcome Dr. Khijwania, and thank you him for sharing his time and expertise with us. Over to you, sir. Thank you, sir.
मेरी आवाज आ रही सभी को? Yes, sir. Yes, विमल sir. जी, हाँ नमस्कार। नमस्कार। और विमल जी, आप मुझे पहले बताइए कि मुझे अभी 6:20 से ऊपर हो गया है, मुझे मेरे पास कितना समय है? वी हैव सर 1 hour. 1 hour, हमारे ठीक पास में एक घंटा है जी, एक ठीक। सवा घंटा है अपने पास में जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, और आपका आभार कि आपने मुझे और शिक्षा सोपान के समस्त गुणीजन, विद्वत परिषद ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर अपने कुछ विचार यहाँ प्रस्तुत कर सकूं। सभी का अभिवादन, सभी शिक्षकों को नमस्कार, और सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। तो जैसा कि विमल जी ने तो बहुत मुझे डिफेंसिव मोड में डाल दिया, उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी कि मुझे ये भी बोलना है, वो भी बोलना है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः यहाँ पर जो बच्चे हैं वो लगभग 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, राइट? Yes, sir. College also, sir. कॉलेज ऑल्सो, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा कि बहुत एलिमेंट्री रखते हुए कुछ अधिक सूचना आपको ज्ञान दे सकूं अपनी सीमित समय सीमा के अंदर। ये मूव क्यों नहीं कर, एक सेकंड, व्हाट इज गोइंग, oh, अब another problem, transparency is not moving. All right, so let me remove this screen, minimize it. All right, oh, this is India, I can't minimize it. So light has fascinated, I mean अगर मैं हिंदी में बोलूं तो प्राचीन काल से जब से सभ्यता का विकास हुआ, बिना सूर्य के तो मनुष्य और प्रकृति की उपस्थिति की कल्पना के परे है। तो प्रकाश ने आरंभ से ही, जैसे ही प्राणियों की उत्पत्ति हुई, प्रकृति ब्रह्मांड की रचना हुई, प्रकाश ने सदैव समस्त मानव जाति को आकर्षित किया। और जैसा हम जानते हैं विभिन्न सभ्यताओं में सूर्य भगवान की आराधना का प्रावधान है। तो लाइट हैज फैसिनेटेड ह्यूमन बीइंग्स सिंस टाइम इमेमोरियल, दैट इज प्राचीन काल से। So before I go ahead, I would just like to emphasize that there are two compartments. So we are basically, when we talk about optics, we are dealing with the study of light. Means ऑप्टिक्स में या तो हम लाइट को मैनिपुलेट कर रहे हैं या लाइट मैटर को इंटरैक्ट करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। वी आर जस्ट प्लेइंग विद द लाइट फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। So when we are playing with the light, as we all know that it is light which we use and which we use in our daily life, is in a visible spectrum of electromagnetic spectrum. So so question comes that now probably some of the students would have learned the photoelectric effect. Some of you would have learned optics. For example, you would have studied as an example interference. So I mean, you know that it has light has a wave nature, means some of the phenomenon can be explained on the basis of wave nature, and some of the phenomenon are explained on the basis of its particle nature. So the question is that, I mean, we have also learned geometrical optics, like when we play with lenses, the mirror, the prism, for imaging a given object. So the question is that in what condition I should use geometrical optics, and in what condition I should use wave optics. So the thumb rule, I mean, this is always a confusion. So the thumb rule is that in an easier way, if I can explain, then the light has its own wavelength, because as I said that light is the visible light which we use in life, falls in the visible part of the electromagnetic spectrum. It has a certain wavelength range. So light has its own wavelength, and so if the object which we are using to manipulate the light, to guide the light in certain direction, or to allow light to interact with certain material or the matter or the surface, so if the object size is very, very large in comparison to the wavelength of the light, then we use geometrical optics. As an example, when we use lens or the mirror, I think everyone, सभी बच्चों ने दर्पण का भी प्रयोग किया होगा, लेंस का भी प्रयोग किया होगा।
तो लेंस अगर आपने कभी प्रयोग किया है तो आपको लेंस का लगभग डायमीटर 1.5 इंच 2 इंच के आसपास का होता है और वेवलेंथ लाइट की बहुत छोटी होती है। तो इस जब हम लाइट को मैनिपुलेट कर रहे हैं कैमरा लेंस या अपने लैब में जो हम लेंस यूज करते हैं तो उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डायमेंशन बहुत बड़ी है लाइट की डायमेंशन से। So in that case, we can use the geometrical optics approximation. I should say it is again an approximation, right? And when the dimension of the object which is used to manipulate the light is of the order of wavelength or shorter, in that case, we have to resort to wave optics. We cannot use geometrical optics in that case. And another way to explain is that suppose as I was listening, अभी मैं सुन रहा था, I think मैम कुछ आपसे वार्ता कर रही थी कि प्रेशर कैसे वायुमंडल का प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है। यदि हम वहीं से मैं लेता हूँ उदाहरण कि यदि हम अपने गर्मी के दिनों में देखें तो धरती जो सड़क है या धरती का जो तापमान है वो अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। तो तापमान ज्यादा या कम होने से वायुमंडल में जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है गैस का, वो उसके अकॉर्डिंगली वेरी करता है। तो यदि धरती के पास का तापमान अधिक है तो वहां पर डेंसिटी कम होगी और धरती के ऊपर जैसे जाएंगे तो वहां पर तापमान कम है तो डेंसिटी अधिक होगी। तो ये जो वातावरण है वायुमंडल धरती से ऊपर हमारा, उसमें चूंकि डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी वेरिएशन होता है, ग्रेजुअली वेरिएशन होता है। तो अब कल्पना करिए एक अपने मस्तिष्क में आप एक कोई लेंथ को विचार करिए, बहुत छोटी सी लेंथ, और वो लेंथ जो आपने विचार किया है 1 मिलीमीटर से भी छोटी। सो उस इन माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻⁶, नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹, उस रेंज की डायमेंशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन कितना होगा? सो इफ the variation of refractive index over the length of the wavelength is negligibly small, in that case we can resort to geometrical optics. Otherwise, so basically thumb rule is that if the object size is bigger, aperture size is bigger, we can use geometrical optics. So wavelength involved are very small compared to the dimension of optical elements, as I said, which is used to interact with the light, or it is used to manipulate light. Then in that case we can use geometrical optics. That has to be very, very clear. Now I can recall the first lecture by Verma Gurudev, वो मैंने भी सुना था और वो बड़ा ही fascinating, बड़ा ही आकर्षक था, जिसमें कि उन्होंने बताया कि एक्सपेरिमेंट का क्या संबंध है थ्योरी से, थ्योरी का संबंध क्या है एक्सपेरिमेंट से। बड़ी अच्छी उन्होंने विवेचना की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के। तो उसी दिशा में मैं आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये हम सभी जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, आई मीन जैसे ही मनुष्य का आविर्भाव हुआ इस धरा पर, प्रकाश से बहुत ज्यादा हमारे घनिष्ठ संबंध रहा। और अगर आपको याद हो कि हम बचपन में, आप लोग भी करते होंगे बच्चों, कि हम एक ग्लास मिरर लेते हैं और मिरर से सूर्य के प्रकाश को डाइवर्ट करते हैं। ये बड़ा बच्चों का खेल होता है। तो ये हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, परंतु हाँ ये पता होता है कि हम एक मिरर लेकर के प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। वास्तव में दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, एंड दिस रिफ्लेक्शन वाज नोन टू द मैनकाइंड सिंस द अर्ली सिविलाइजेशन। सो आई मीन इफ अ लाइट फॉल्स on a mirror, then we know that it will be reflected. And so I mean if I change the angle here, I mean if I change this angle at which this light is striking on the surface, the angle at which this ray will be reflecting will also change. And this was known to the people, to the human being since early days, that the angle of incidence and the angle of reflection will be same. And here is the picture. You see here beautifully, the light is incident on the surface and is being reflected. So this is experimental observation, and that is the schematic of that. And normally what we do here is that we see the reflection from the rarer medium
and this is my, water level. So the light which you see here is the reflection. So light, you change the angle of this light which is incident on that, and that way this angle will be changed. This is an observation which you people used to observe since the early days. So as I said, that the rule means if I change this angle will change. So what is interrelation? इन दोनों एंगल के बीच का क्या संबंध है, ये प्राचीन सभ्यता में भी सभी को पता था कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर। अब समस्या यहाँ पर तब आएगी जब यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पहले जो मैंने लिया था पहले वाले में, यहाँ पे मैंने एक मिरर लिया था, यहाँ पे मैंने जल लिया था अवश्य। अब इसी को थोड़ी हम अधिक विवेचना करें। तो यहाँ पर मैंने एक हाई इंडेक्स मीडियम लिया हुआ है, दैट इज सपोज ये जल है, वाटर है, और यहाँ पर एयर है। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये जल और वायु और जल के बीच की बाउंड्री है। अब यदि यहाँ पर एक हम किसी लाइट को यहाँ पर if we allow to fall on this surface at a given angle, then it was observed by the people since the beginning that light will not propagate in the same direction. It will bend, it will deviate from its normal direction in which it was traveling. So this angle will change. The angle along which this light was propagating will change to certain other angle, and which will be smaller. And so it was like people used to be very, very curious. I mean, how this angle, these two angles are interrelated, and things became worsen if you change theta 5-1. For example, here, this is my 5-1, the angle of which we know angle of incidence. If we change this angle of incidence, you see the angle at which the ray will emerge in this water will further be changed. And if you further change the angle, making it incident on the surface at nearly normal incidence, then in that case, the ray will not deviate from its original path and will keep on moving in the same direction. This was a big puzzle. Reflection was very clear, that angle of incidence and angle of reflection, but here it was like angle is changing. So, so this was observed since beginning, but our civilization, the people around, could not find the reason why it is happening, or what is the relation between the two angles, one at which light is incident and one at which light is emerging in the second way. So it was a big puzzle. But then around 140 after Christ AD, Claudius Ptolemy measured the angle of refraction in water for different angle of incidence, and he made a table out of that. And I'm just showing, so this is just an observation. It's just an observation. He was not a scientist, right? So he just observed this, and many people observed this. It's not like he was the first person to observe it. बहुत सारे लोगों ने इस घटना को, इस परिघटना को का प्रेक्षण किया था. परंतु Claudius Ptolemy was the first person who made a measurement. He observed and then he made a measurement. What happened? He changed the angle of the light which is incident on the surface and measured the angle in the water. And it was just a very crude measurement. It was in Greek. He was from Greek civilization. So, and then he measured the angles and then he noted down, made a table and left the paper, and he died. No one knew. किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई observation किसी ने करके रखा हुआ है. So it was, see, I mean, this is 140 AD. So after around 1200, that is, so, I mean, what is important here is that, before I go to the next slide, that, I have an observation. I have an observation. I have an data. Now, the only thing is that I cannot relate these two angles. I cannot find a rule that connects these two data. This is angle in air, I mean, that is here, and this is angle in water, that is angle over here. So the beautiful thing is that the important step to develop a physical law is that observe an effect, first thing. Second thing is that make a measurement. Once you make a measurement, then essentially, this is blocking, let me put something. Then list the data or your observation, which you are making a measurement for, and then find a rule that connects the data from one to other. So this is how many of the theory evolved. In this case also, the
observation first, then curiosity came, why it is happening, what is happening, to understand that. And that way measurement was done, observation, measurement, then data were collected, then it is the analysis, which is very important. But Claudius Ptolemy could not make that analysis, and this data was left over the years. People were not knowing about that. Then things become, so as I said, after around 1200 years, that is in 1621, another mathematician, such mathematician, Wilbrod Snell, which we know as commonly as a Snell. So he discovered, he found this paper first. The important point is that he found this diary of Ptolemy, he got this data, and then he tried to make a relation between these two angles. And what he made, so what he did basically, he tried to find a constant. He found that the sine of this angle and sine of these two angles are interrelated, and these are proportional to each other, and the proportionality constant is n. And this is how. So मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो बच्चे कॉलेज के होंगे, यानी कि जो बीएससी कर रहे होंगे, अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, सामान्य रूप से हम जब अपनी कक्षा 11-12 में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम डेटा हाथ से लिखते हैं और लिख करके उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, राइट, और फिर उसको हम फिट करते हैं. लेकिन जो बच्चे बीएससी में होंगे, एमएससी में होंगे, बाद में जो बच्चे रिसर्च करेंगे, वहां पे हम डेटा लेते हैं, उसको कंप्यूटर में प्लॉट करते हैं, एक्सेल में. तो एक्सेल में जो आप प्लॉट करते हो डेटा को, तो आपके पास एक विकल्प होता है कि आप उस डेटा को फिट कर सकते हो लीनियर लाइन से, पैराबोलिक से, वेरियस expressions of various kind of polynomial of various degrees you can fit in. वो जो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसको जो आप फिट कर रहे हो, मान लीजिए आपका डेटा ऐसा है कि वहां पे बेस्ट फिट है आपका लीनियर लाइन. सो लीनियर लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो आपका एक इंपिरिकल रूल बन जाता है. आई मीन यू आर एक्सपेक्टिंग दैट योर डेटा is following, say y is equal to mx or say y is equal to mx plus c. But so this is a prediction that your data are related in that method according to that rule, which you are getting by plotting your data and fitting into that. So this is how Snell interrelated these two data. And then when he observed and analyzed and come up with this conclusion that sine phi 1 is equal to n sine phi 2, n is the refractive index of this medium, then he calculated, using this phi 1, he used the same angle as was used for observation by Ptolemy. He used this angle, and then he tried to forecast what is going to be phi 2, that is angle in water. And you see here, so this is the famous, so here is that, you see the angle which he calculated on the basis of this formula, which we know now is the Snell's law. Now, if you see these angles as predicted by this law, and see this angle which was measured by Ptolemy, you see there's a remarkable agreement. I mean, of course, like it is 8 degree, it is 7.5 degree, like 15.5 degree, it is like, or 15 degree, 30 minute, like that. And so, I mean, but it is a, I mean, with a crude way, Ptolemy did the experiment. This matching of the data, actually observed data and the data which is predicted from this rule is really remarkable. So, so this is how. So that is what is. So I have a data. I made an observation. I had a data. I did experiment. I tried to understand how the things are working. I got a data. Then I have to interrelate them. And now I found this relation. But as I said, it is an empirical relation. It has no theoretical background to support it. That yes, these two data will be interrelated in this fashion. So then comes to investigate why it is happening. Well, I mean, what is the basis of, well, I can get this data. I got this rule, but what is the authenticity of this rule? So, I mean, here is a very important statement which I'm going to share with you. This is the Feynman, Richard Feynman. So, so what he mentions in his book is that, but the real glory of science is that we can find a way of thinking such that the law is evident. The first way of thinking that made the law about the behavior of light evident was discovered by Fermat, we say, in about 1650. So, I mean, Ptolemy observed, he got the data. Snell made an empirical relation without any theoretical background of that one.
Then the first theoretical background of that was developed by another scientist, or his name was Fermat, and that was around 1650. So it is called the principle. So the rule or the theory which was proposed by Fermat to relate the two angles was the famous Fermat principle that says that light takes a path between 2 points in a way that it uses the least amount of time. So I'm showing that over here the next transparency. So before I go ahead, and so here, the light bends over here, and that is this was that phi2 is smaller than phi1. This was basically predicted by Snell's cells. But then let's try, before I go ahead and just elaborate what is the Fermat principle, let us try to understand this phenomenon of we know that this is refraction of the light. This is reflection, this is refraction. Let us try to understand this refraction from the mechanical analog. And so it is an experiment which you can do. For example, you take in your home, say the floor, which is very smooth. In this case, I am taking a road, which is a concrete road, and this is a grass. What you can do is that you can have, what you require is that a smooth surface and a boundary. And this, in this region, there can be a grass like in your lawn, or you can put some kind of sand or the मिट्टी वहां रख सकते हो, बालू रख सकते हो. तो ऐसे यहाँ पर दो विभिन्न क्षेत्र बनाने हैं, एक बिल्कुल चिकना है और एक जिसमें रफनेस है. अब इस कंक्रीट जो चिकना है, जो स्मूथ सरफेस है, let us roll a drum. Let us roll a drum, right? So not at an angle normal to this boundary. So let us roll a drum at some inclination in this direction. What will happen? Because this is a smooth surface, it will roll and will proceed in this direction. The moment this will reach at the surface, see this part, the left side part of this drum will come into the contact of this frictional surface, the surface which is rough. So what will happen? This end of the drum will slow down. Nevertheless, remaining part of this drum is still moving in smooth part. It will keep on moving with the same velocity, and that way the drum will be having a pivotal effect. That is, it will turn. It will turn. So this is exactly what is happening if you try to understand why the angle of refraction is smaller than the angle of incidence. But then you will say, sir, I have a ray, and here you are taking a drum. So when I draw a ray, for example, this is my ray, which is the like pencil of the beam. So how I can explain the bending of, how I can understand for explaining, how can I understand what you are saying? Here you are explaining in terms of drum, which is having a finite extension, and my beam of light, or the ray which I'm using for understanding or drawing the figure for the reflection is a ray. So here is the confusion, and that I think I should like to emphasize over here. Light, for example, if you see this is my laser pointer, this is my laser pointer. Do you see that this laser pointer, if you see the dot which you see on the screen, is it a point? It has finite extension. इसका एक विस्तार है. इस जो आपको लेजर पॉइंटर दिख रहा है, आपके पास भी लेजर पॉइंटर होगा. आप किसी प्रयोगशाला में जाएं, वहां पे लेजर आपको दिखेगी. तो जो आपको लेजर का मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, लाइट का भी आपको दूंगा. तो ये जो ये आप यहाँ देखें, इसका फाइनाइट एक्सटेंशन, इट इज नॉट अ पेंसिल ऑफ द बीम जिसका कि कोई फिजिकल एक्सटेंशन नहीं है. तो जब हम जो लाइट जो सूरज से आ रही है, कमिंग फ्रॉम वेरी फार, राइट? सो व्हाट प्रॉब्ली सम ऑफ यू वुड बी नोइंग, कि यहाँ पे बताता हूँ, आपने सबने पढ़ा होगा हाइजेंस प्रिंसिपल, आप सबको वेव फ्रंट पता है. तो जो वेव सूर्य से आ रही है, या जो वेव हम डील करते हैं, जनरली हम उसको प्लेन वेव मानते हैं. प्लेन वेव क्या है? Suppose my wave is traveling in this direction, and if I just take a locus of all the points of the medium which are in phase, locus of all the points which are in phase in the medium, then the locus will be surface naturally. So if that surface is a spherical, the wave will be spherical wave. If the surface is plane, we say the wave is plane wave. So here is the plane wave, as you can see here, because this is
wavefront, which is in the shape of plane, and the ray is, I mean, the beam is propagating or in the direction which is normal to the wavefront, as we all know from the Huygens principle. You have done that. So this plane wave mathematically is expressed in this fashion. This E is the electric field associated with the electromagnetic wave, right? So this is the amplitude. And आप लोग सामान्य रूप से आपने यहाँ पर cos पढ़ा होगा या sin पढ़ा होगा, cos KR minus omega t या sin KR minus omega t, वो बिल्कुल सही है. जो रियल वेव है उसको हम cos या sin से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए जब हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, आगे कक्षाओं में जाएंगे, तो मैथमेटिक्स बहुत इन्वॉल्व हो जाती है, तो वहां पे ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमें हेल्प करता है मैथमेटिक्स सिंप्लिसिटी के लिए. बट लेकिन ये ध्यान यहाँ पे आवश्यक है कि दिस इज नॉट द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ द वेव बिकॉज इट इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बट व्हेन वी राइट the electric field of a wave in this fashion, we keep in our mind that the real part of this is actual wave. So अगर मैं e to the power I theta लिखता हूँ तो वो हो जाता है cos theta plus I sin theta. रियल पार्ट लूंगा तो cos theta आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट लूंगा तो sin theta आ जाएगा. दोनों sin theta cos theta दोनों रियल हैं, तो मुझे वो वेव मिल जाएगी. जब हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं तो हम हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं कि ये मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए है. एक्चुअल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेव का, वो इसका रियल पार्ट. अब वापस यहाँ पे आते हैं. तो मैंने बताया कि अगर मैं एक वेव है, अब सोचिए कि मेरे पास एक वेव है, वो वेव मीडियम में ट्रेवल कर रही है. तो वेव जब मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो ऑस्किलेशन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं. तो अब हम वहां पर उस पूरे मीडियम में जिसमें ट्रेवल कर रही है, हम जैसे प्रकाश आ रहा है सूर्य से, या हम जब अपने लैब में मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने कमरे में मैनिपुलेट कर रहे हैं, घर में मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो हम, आप सोचिए कि जो लाइट प्रोपगेट कर रही है, हम उस मीडियम के वो सारे कणों को एकत्रित करें, और उनका उन सारे कणों के समूह को एकत्रित करें जो सेम फेज ऑफ ऑस्किलेशन में होंगे. और वो यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जब हम प्लेन में बात करते हैं तो वो जो सरफेस होगा, जो लोकस होगा इन सारे पॉइंट्स का, वो प्लेन होगा. नाउ यहाँ पर आपको जो प्लेन दिख रहा है, इसकी बाउंड्री दिख रही है. इट इज अ प्लेन having a finite dimension, but in general, when we say the plane wave, the meaning of plane wave is that its wave front extends from minus infinity to plus infinity in all the direction. All the direction मतलब अगर ये वेव मेरी z डायरेक्शन में जा रही होगी तो इसके नॉर्मल प्लेन कौन सा होगा, XY प्लेन होगा. अब ये XY प्लेन मान लो आपका धरती वाला प्लेन है, तो इट हैज टू गो फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्लस, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी along x एक्सिस, along y एक्सिस. पर ये तो हाइपोथेटिकल है, ऐसे तो कोई वेव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती कि उसका जो वेव फ्रंट है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाए. सो यहाँ पर ये बात स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि जो हम वेव, प्लेन वेव की बात करते हैं, वो एक हाइपोथेटिकल, एक्चुअल वेव इज नेवर अ प्लेन वेव. सो पहली बात तो यानी कि जो हमारा जो, फिर भी यदि हम, ये एक बात तो स्पष्ट हो गई. दूसरी बात क्या है कि नॉर्मल जो हम लाइट को मैनिपुलेट करते हैं या लाइट मैटर, जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो एज आई सेड कि वेव फ्रंट विल बी हैविंग अ फाइनाइट एक्सटेंशन. सो जो हम पेंसिल ऑफ रे की बात करते हैं, पेंसिल ऑफ रे इज जस्ट हाइपोथेटिकल. फॉर एग्जांपल अगर हम मैकेनिक्स में बात करें, आप सबको बहुत बुरी है, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, वहां पे बोलते हैं पार्टिकल इज ट्रैवलिंग. अरे भाई पार्टिकल क्या है? देयर इज नो पार्टिकल एट ऑल. आपकी बॉल है, जो क्रिकेटर बॉल को फेंक रहा है, आपका जो फुटबॉल खेल रहा है वो फुटबॉल को किक मार रहा है, राइट? आपकी जो कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, वो एक उसका फाइनाइट एक्सटेंशन है. बट इन सर्टन कंडीशन, आई एम नॉट गोइंग टू द मैकेनिक्स, in certain condition you assume that entire mass of the body is concentrated on a single point, right? मतलब कि अगर मेरे बॉडी का वेट अगर मान लीजिए कि 60 किलो है, 65 किलो है, तो 65 किलो एक बिंदु पर केंद्रित है. ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? तो लेकिन हम ये मान लेते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल. तो जैसे पार्टिकल हाइपोथेटिकल है मैकेनिक्स में, वैसे पेंसिल ऑफ रे इज हाइपोथेटिकल, but that gives me a very good approximated results which are very, very close to accuracy, very, very high, for the case when, as I said, my dimension in which my wave is traveling, my light is traveling, I should not say wave or ray, my light is traveling. So the reason in which my light is traveling and being manipulated, that is large. In that case,
Normally, as I said, we use to approximate the propagation of light by a single pencil of ray. But ये single pencil of ray ये hypothetical है. तो हमारी वेव का finite extension, जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये जो beam है, ये beam is not a single pencil of beam. It's not a dot which you see on the screen. It has finite extension, right? तो अब यहाँ से वापस आते हैं कि मैंने ड्रम का उदाहरण क्यों लिया था. अब आपको मेरे विचार से समझ में आना चाहिए कि मैंने ड्रम का उदाहरण क्यों लिया था. क्योंकि जो कंसेप्ट है कि हम एक रे बनाते हैं और फिर रे ऐसे आता है, ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है. तो जब हमारी बीम जो आ रही है, बीम का फाइनाइट अगर एक्सटेंशन है, तो नेचुरली यही फिनोमेना अगर हम मैकेनिकल एनालॉग सोचें तो ऐसे कुछ होगा कि भाई जो यहाँ पे आया वो तुरंत इस मीडियम में घुस गया और जो यहाँ चल रहा है वो बाद में आएगा, तो ऐसी बेंडिंग होगी. पर ये एक मैकेनिकल एनालॉग है. वी हैव टू जस्टिफाई व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द रियल थ्योरी, एंड दैट इज व्हाट इज गिवन बाय द फर्मेट. In 1962, Fermat proposed a principle that out of many paths that we have, for example, instead of reading, so suppose my light has to travel from point A to point B, and assume that this medium in which these 2 points are is homogeneous medium. So there can be, I mean, suppose ऐसा मान लो कि लाइट मैं लाइट हूँ, तुम मुझे या तो तुम लाइट हो, तुमको यहाँ से A से बिंदु B तक जाना है. तो there are many ways to go from A to B. So someone can take this route, someone can take this route, excuse me, someone can take this route, and someone can take this route. लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा या बच्ची होगी वो सीधे यहाँ से वहां जाएंगे. यही फर्मेट ने प्रपोज किया कि लाइट को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना होगा तो वो वाला मार्ग चुनेगी जिसमें उसको सबसे कम समय लगे. यहाँ लिखा हुआ है लाइट रे the actual path taken by the light ray corresponds to least time of traversal. अब उसने थ्योरी प्रतिपादित की, लेकिन अगर ये थ्योरी प्रतिपादित की, इस थ्योरी के आधार पर उसको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को उसको एक्सप्लेन करना होगा, नहीं तो इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है और ना वहां के डेटा का कोई मतलब है. तो देखिए कैसे फर्मेट ने अपने प्रिंसिपल से जस्टिफाई करने का प्रयास किया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को. अब यहाँ पर हमारा एक मिरर है और हमारी लाइट को बिंदु एस से चल के बिंदु पी तक पहुंचना है. तो आप तो कहेंगे बहुत बढ़िया, सीधे एस से निकालो और पी तक जाओ, क्योंकि फर्मेट ने बोला कि दो बिंदु के बीच में जो मार्ग सबसे कम समय लेगा लाइट वहां जाएगी. लेकिन यहाँ पर एक हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि लाइट को बिंदु एस से बिंदु पी तक जाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाना है, मिरर्स होकर जाना है. तो मिरर्स होकर जाने वाली जो लाइट है उसका पाथ क्या हो, उसका मार्ग क्या हो. इसमें देखिए फर्मेट ने क्या दिमाग लगाया, क्या बुद्धि लगाई. तो अब देखिए एक तो रास्ता ये हो सकता है, एक मार्ग ये हो सकता है, दूसरा मार्ग ये हो सकता है, तीसरा मार्ग ये हो सकता है. तो अब तो निश्चित रूप से डायरेक्ट तो मार्ग यहाँ पे वंचित है, वो तो जा नहीं सकते. लाइट जाएगी वो वहां जाएगी, उसको तो कोई वो तो सुना तो लाइट तो यहाँ से हर दिशा में जाएगी. लेकिन जो मिरर्स होकर जा रही है, मेरा कंसंट्रेशन मैं उसी को खाली अभी यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ. तो अब मेरे पास कई सारे मार्ग हैं, SAP, SBP, SCP. अब मैं कंफ्यूज हूं या फर्मेट साहब कंफ्यूज है, कौन सा मार्ग इसमें. एक ऐसा भी हो सकता है कि सीधे यहां से नीचे जाए और यहां से जाए, ऐसा भी हो सकता है. तो अब देखें फर्मेट साहब ने के प्रिंसिपल से उन्होंने कैसे इसको समझने का प्रयास किया. तो उन्होंने क्या किया, लेट्स ड्रॉ एज वी नो कि अगर ये मेरा प्लेन मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज मुझे यहाँ पर मिलेगी. अब इन्होंने क्या किया, अब लेट्स डू द, सो ही यूज्ड ज्योमेट्री, तो मैं भी वही ज्यामिति का प्रयोग करूंगा. ये जो SD है, वी नो, हमको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से जितनी दूरी होती है इमेज की भी उतनी दूरी होती है. तो SD और DS प्राइम समान होगा. अब मैंने इस बिंदु A को यहाँ से मिला दिया, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया. तो ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल सर्वांग हो गए. तो इस केस में SA इज इक्वल टू S प्राइम A हो गया. अब यदि हम ऐसे B को यहाँ से ज्वाइन कर दें तो SB will be equal to S prime B, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. ऐसे यदि हम इस बिंदु को यहां से ज्वाइन कर दे तो SC और S प्राइम C ये बराबर हो गया. तो एक्चुअल जो मेरा रे पाथ ले रही है, मार्ग ले रही है, वो एक है SAP, लेकिन SA इज इक्वल टू S प्राइम A. तो एक्चुअल तो हम SAP को लिख सकते हैं S प्राइम AP. ऐसे जो दूसरा उसका मार्ग है SBP, उसको हम S प्राइम BP लिख सकते हैं. तीसरा मार्ग है SCP, हम लिख सकते हैं S प्राइम CP. अब ये 3 मार्ग हुए मुझे, एक ये ऐसे जा रहा है,
एक ये ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। यानी कि अब जो हमारा जो हमारी कंसेप्ट थे कि हमको यहाँ से यहाँ देखना है, अब इसका जो मिरर इमेज मुझे मिला यहाँ पर, अब मेरे पास ये दो बिंदु हैं और मेरी रे को या लाइट को इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है। तो निश्चित रूप से जो यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जिसको सबसे कम समय लगाएगी, वो क्या होगा? स्ट्रेट पाथ। एस प्राइम से पी को ज्वाइन कर दीजिएगा और वो आपको कौन सा पाथ मिल रहा है? वो मिल रहा है एस प्राइम बी पी। So this is the straight line. So minimum optical path between S and P through mirror M corresponds to a straight line between S prime to P. तो ये वाला पाथ मेरा हो गया, राइट? तो अब यदि यहाँ पर हम देखें, यानी कि ये मेरा हो गया S B P, ये वाला हो गया मेरा. In that case, if I now draw a perpendicular over here, which is very easy for you to understand, कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, राइट? ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा. तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, that can be well supported, that is well supported by the principle which Fermat gave. So Fermat can easily, explain law of reflection, but then the real problem was for refraction for him, because अब यहाँ पे उसके अनुसार तो अगर बिंदु एक S यहाँ पर है और दूसरा बिंदु P यहाँ पर है, तो by principle of least time, इस रे को डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है. उसने जब देखा तो एंगल चेंज ही नहीं हो रहा है. तो उसका जो प्रिंसिपल था, he was lost. He could not, it was having, great difficulty to, even not only he, people around that time had a great difficulty to understand why this angle is changing theoretically. Law to tha, empirical law tha. Then what is done here? So what he did, so this Fermat principle was modified. And see what is the modification here? The actual path, optical path length is an extremum with respect to the variations in the neighborhood of the path. अब इसको देखते हैं यहाँ पे. मैंने क्या किया? पहले हमने क्या किया था, देखो आप, ये जो मेरा बिंदु था, सॉरी पिछले वाले में, ये स्ट्रेट लाइन है. मेरा जिस पॉइंट पर रे इस सरफेस को स्ट्राइक कर रही है वो यहाँ पर है ना, ये स्ट्रेट लाइन पाथ. अभी मैंने क्या किया, तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे चल रही है, इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे चल रही है. यहाँ पे फास्टर चलेगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे स्लोअर चलेगी, राइट? अभी क्या हुआ, इसमें क्या किया हमने कि जो लाइट एयर में चल रही थी उसको हमने उसके पाथ को बढ़ा दिया, और यहाँ पे वो फास्ट चल रही है और यहाँ पे स्लो चल रही है, इसको मैंने घटा दिया. तो ऐसे मैं टाइम का मैनेजमेंट करूंगा, राइट? दूसरा पॉसिबल पाथ क्या हो सकता है कि साहब यहाँ से इस पॉइंट पे स्ट्राइक करें और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसमें भी एंगल कम हो रहा है. और भी ऐसे कई सारे मार्ग हो सकते हैं. ये मार्ग भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कम हो रहा है. यानी कि ये 1, 2, 3 सारे के सारे मार्ग जो है वो संभावित मार्ग है, ये कोई भी मार्ग हो सकता है. लेकिन हम इनमें से चुने कौन सा सही है, इसके लिए क्या करते हैं ये बताना. तो अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु जहां पर ये ग्रीन वाली रे 2 स्ट्राइक कर रही है, वहां से हमने इस येलो वाली पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट? और इसी प्रकार से इस रे से जो येलो वाली यानी रे 1, उससे हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. अब हम यदि S और B को देखें डिस्टेंस, और S हालांकि ये एग्जैगरेशन है, यानी कि ये बिंदु A और ये बिंदु P O और ये तीनों बिंदु बहुत पास है. तो यदि हम देखें ये जो डिस्टेंस SA और SB ये लगभग बराबर है. यानी कि जो पाथ 1 वाली रे है वो BO इतनी अमाउंट ज्यादा चल रही है एयर में, और हम इस रे को यानी कि यहाँ पर मीडियम 2 में यदि हम येलो वाली और ग्रीन वाली को देखें तो O से P लेंथ और P से, सॉरी P नहीं होना चाहिए था, P से ये P लेंथ बराबर है. तो यानी कि ग्रीन वाली लाइट जो है, जो मार्ग है, वो AP डिस्टेंस ज्यादा ही चल रहा है. तो अगर ये मार्ग और ये मार्ग बराबर होता है, तभी बराबर होगा जबकि ये जो डिस्टेंस BO है वो एयर में चल रही है. तो इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ये जो आप यहाँ BO देख रहे हो वो ज्योमेट्रिकल पाथ है. इसको जब हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है. तो यहाँ पर जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ BO हो गया. अगर ये डिस्टेंस और ऑप्टिकल पाथ लेंथ corresponding to AP, which will be this geometrical distance multiply the refractive index of this medium is same, in that case क्या होगा, ये दोनों की दोनों जो रेज हैं वो सेम टाइम लेंगे, right? That means in that case this point A will be very close to point O. So applying this one now, अगर इस कंडीशन के बाद यदि मैं यहाँ पर ये एंगल मानूं phi,
तो ये कंडीशन यानी कि ये दो रेज आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, इन दैट केस इफ वी कैन गेट this relation which was predicted by Snell. So using the Fermat principle with certain modifications, modification क्या बोलता है कि रे वो पाथ यूज करती है, अभी पहले क्या बताया था कि रे वो पाथ यूज करती है जिसमें कि उसको समय सबसे कम लगे। अब यहाँ पे क्या है कि रे वो पाथ यूज करती है जो स्टेशनरी मतलब कि जैसे हमें पता है, हम जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मैकेनिक्स में आइए, आपको एक पेंदी वाला, बिना पेंदी वाला लोटा है, हल्का सा उसको डिस्प्लेस करते हैं, वापस अपने इक्विलिब्रियम में आता है, राइट। तो ऐसे ही रे का वो पाथ होगा जिस पाथ से आप उसको थोड़ा सा विचलित करें लेकिन उसमें टाइम बिल्कुल बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इस बिंदु O से P8 पर जाएंगे तो जो टाइम टेकन बाय, अगर ये डिस्टेंस ऑप्टिकल पाथ लेंथ यहाँ पर और ऑप्टिकल पाथ लेंथ ये बराबर है, तो दोनों ही पाथ पे यानी कि मार्ग 1 और मार्ग 2 में जो रे है, लाइट है, वो लगभग बराबर समय लेगी। तो वो मार्ग होगा। यदि हम यहाँ पर देखेंगे उस केस में ये जो टाइम का वेरिएशन आएगा वो ज्यादा होगा, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो रे है वो उसके स्टेशनरी वाले यानी इक्विलिब्रियम वाले जोन में नहीं आएगी। तो दिस इज हाउ Fermat principle is used to justify Snell's law, but still it is this is, of course it is true, it was measured afterwards, it was it was justified experimentally that yes, light takes the path, the light travels through a certain path, but still the concrete theoretical depiction and understanding of this phenomena was still not there. तो अभी तक तो मैंने यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे एक मीडियम है जिसका एक फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 जो 1 है, यहाँ पर एक है N2 जिसका N है, यानी कि ये एयर है और ये ग्लास है। अब जैसा भी मैंने स्टार्ट किया, मान लीजिए कि हमारी ये उल्टा हो गया यहाँ पर बेसिकली कि मेरा ये सड़क है और यहाँ पर जो तापमान है वो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तापमान बढ़ता जा रहा है। अगर तापमान ऊपर जाने में बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी मीडियम की लेयर बाय लेयर कम होती जाएगी। मैंने यहाँ पर हर लेयर को, एक्चुअली वो इस लेयर की थिकनेस बहुत कम है, परंतु मैं इसको थोड़ा सा मोटा करके दिखाया ताकि हमें समझ में आए कि लाइट इसमें कैसे ट्रेवल करेगी। तो क्या है, तापमान ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, जहाँ तापमान ज्यादा होगा वहां डेंसिटी कम होगी, राइट। तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी कि इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है ना। एक्चुअली ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया ये विड्थ ये बहुत ज्यादा लिया है, वास्तव में इतनी मोटी नहीं होती है, बहुत पतली लेयर होती है। तो ये जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम में ऐसे वेरी करता है हम उसको बोलते हैं ग्रेजुअल वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, यानी कि स्लोली वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जब स्लोली वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो लाइट तक होगा, लाइट यहाँ से जाएगी, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये डेंसर से रेयर में जा रही है, मूव अवे फ्रॉम the normal, again ये रेयर से डेंसर, यहाँ पे डेंसर से रेयर में जा रही है, अगेन बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जैसे जैसे इसमें जाती जाएगी ये बेंट होती जाएगी और एक किसी बिंदु पर यहाँ पर आकर के वो वापस आ जाए। अब ये बड़ा चैलेंज था साइंटिस्ट के लिए कि भाई ये वापस कैसे आ रही है, इसको तो इधर भी निकल जाना चाहिए था। तो यहाँ से संभावना ये है कि कुछ और हो रहा है यहाँ पर जो अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया, और इसको हम बहुत अच्छे से ये जो बेंडिंग ऑफ द सी, यहाँ पर जो हमारा ये जो लाइट मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ हियर, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेजुअली वेरिंग इन अ गिवन स्पेस। और इसी का हम अद्भुत उदाहरण देखते हैं जब हम गर्मी के दिनों में सड़क पे जाते हैं तो हमको अगर सामने से मैं इधर से आ रहा हूँ अपने स्कूटर या कार से और ये बस सामने से आई तो हमें इसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि जो रे है वो बेंट होती है और इसलिए हमको रे ऐसे बेंट हो गई, तो मेरे लिए वो तो सीधे से आ रही है तो उसका नीचे से आती प्रतीत होगी, इसलिए देखिए इसकी इमेज हमें सड़क के नीचे दिखाई दे रही है। तो अब ये समस्या ये हुई कि भाई यहां से लाइट नीचे कैसे आ गई, तो उसको हम थोड़ी सी गहनता से विवेचना करेंगे, अभी हमारे पास थोड़ा समय है। तो अब यहाँ पर मैं इस बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये मान लीजिए कि मेरा एक मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और ये दूसरा मीडियम है उसका N2, ये N1 है और ये N2 है। ये मेरा डेंसर मीडियम है, जैसा आप कलर कोड से देखा है, ये मेरा ग्लास आप मान सकते हैं। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ इस पर फॉल करने के लिए। अभी हमने क्या देखा, वी हैड इट ऑनली मेड एन ऑब्जर्वेशन, did some measurement, did some experiment and took the data.
उसको स्नेल ने एनालिसिस किया और उसमें एक एम्पिरिकल रूल दिया, उसको जस्टिफाई करने के लिए फर्बर्ट ने थ्योरी दी, बट दैट थ्योरी वाज जस्ट दैट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम और पाथ दैट विल बी स्टेशनरी, बट उसका और सॉलिड बैकग्राउंड क्या है, कैसा क्यों होता है. टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू मूव टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स. At higher level, optics and electrodynamics merges. These two are not two different branches. तो चूंकि बच्चों का आप लोग अभी कक्षा 11-12 और कुछ ग्रेजुएट लेवल के भी बच्चे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत स्लो बताऊंगा आपको, लेकिन आप सबको ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, राइट. सो ये अगर मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस दिशा में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगा. और जो के वेक्टर है, के वेक्टर वो के वेक्टर आपको दिशा बताता है जिस दिशा में मेरी वेव ट्रेवल कर रही है या एनर्जी प्रोपगेट हो रही है, अगर मेरा मीडियम होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक और लीनियर मीडियम. तो ये जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दिस इज इट्स वेव फ्रंट. एज यू कैन सी, वेव फ्रंट हैज फाइनाइट एक्सटेंशन एंड ये यहाँ पे इंसिडेंट किया इसने, और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया और रिफ्लेक्शन हो गया. अब अगर मुझे इसको really understand, if I had to understand what is happening, then as I said कि मुझे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के चश्मे से देखना पड़ेगा, उसके एंगल से, उसके पर्सपेक्टिव में मुझे इन सारी घटनाओं की विवेचना करनी होगी. तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं फॉर इंसिडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड एस ये है, I stands for incident, R is stands for the reflected ray and T stands for transmitted ray. तो मेरे पास फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है, फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है एंड फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी लाइट जो रिफ्लेक्ट भी हो रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है. और ऐसे ही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, एज यू नो कि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स वेव व्हिच इज हैविंग E and H. तो H हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे मैं मैक्सवेल इक्वेशन यूज करती हूँ. और जो यहाँ पे K है वेव वेक्टर, वो होता है K is equal to omega by V. V is the velocity by which my wave is or light is moving in this medium or in this medium. तो अब यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से बात करते हैं, तो मैं वहां डिटेल में नहीं जाता हूँ. फील्ड हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस. दैट इज वन कंडीशन. फील्ड कैन नॉट बी डिसकॉन्टिन्यूअस अक्रॉस इफ इट इज dielectric medium. There's no, I mean, I should not go into all the details. So if this is my dielectric interface, in that case my field has to be continuous. कौन सा field? The parallel component of the electric field. When I say parallel means, for example, you see here the screen in which you are seeing this presentation. This screen, if the electric field is in the screen, we say it is parallel. Okay, parallel to this field is in the plane of incidence, and dot means towards you. So that means my electric field can either be in this direction or can be in this direction. That should be one thing. Now when I say that, so electric field, the tangential component of electric field, when I say tangential, means tangential to this surface. That surface will be XZ surface, right? And XZ surface will make the boundary. आप सोचो कि ये ग्लास की प्लेट है, तो इसकी यहाँ पे एक सरफेस होगी, उस सरफेस के पैरेलल और उस सरफेस के परपेंडिकुलर. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस for this one at the moment, just across the boundary. So this just across means just before and just after, parallel component of electric field has to be continuous. So अब तो जैसे मैंने बताया, दो संभावना हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर है डॉट हो, तो यहाँ पर ये सिचुएशन होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. प्लेन ऑफ इंसिडेंस इज द प्लेन which you know which contains incident ray and the normal. In that case, if I apply the continuity of parallel component, I will be getting this condition. And if I apply for second case, when my electric field is in the plane of incidence like this one, in that case, continuity of electric field across this surface will give me this condition. Okay, I'm not going into detail because I'm not teaching this course. I want to make it simple. But these two conditions will lead that frequency does not change as light gets reflected and transmitted. ये जो कंडीशन है कि frequency does not change, it comes from the continuity of the field across when we have the dielectric interface. Okay, इसकी दूसरी तरह से विवेचना कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, क्योंकि neither this medium nor this medium, neither the surface are absorbing, right? So आपको पता है कि h nu is the hf, or the frequency into h is the Planck constant, is energy. So energy has to be conserved. So वो दूसरे ढंग से हम समझ सकते हैं, परंतु जो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, that comes from boundary condition.
or continuity condition, and that continuity condition also gives me what is kx. ये मेरा k वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट, ये यानी कि तीनों वेक्टर का x कंपोनेंट सेम होगा, तीनों मतलब इंसिडेंट वेव वेक्टर, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, इनका जो x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट विल बी टेंजेंशियल टू द सरफेस, विल बी सेम, एंड इनका जो z कंपोनेंट है, z कंपोनेंट भी इसी सरफेस के अलॉन्ग होगा, राइट, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग द रिलेशन एंड दिस these angles here, तो हमें क्या मिलता है कि theta I is equal to theta R, that is the law of reflection is actually comes from the electrodynamics, it has root in electrodynamics, and similarly from here we get the Snell's law. Remember जो Snell's या पिटोल्मी ने जो डेटा लिया, Snell's जो एनालाइज किया और फॉर्मेट ने जो उसको एनालाइज किया, उसमें उन्होंने खाली माना कि यहाँ पर एयर है 1 और यहाँ पर है n, and this applying the boundary condition we can play with n1 and n2 both. So this is how we get this is the correct concrete support of, so see this is a remarkable thing, that someone who is not physicist or takes an observation, takes some data, and another person who's a mathematician, he just predicts a law on the basis of fitting the data, and that fitting data came out to be so correct that it is supported by electrodynamics also. That's really a remarkable story here. So now the thing will be, so life will be then miserable if we change the direction of propagation of light. For example, in this case, light was traveling from the rarer medium to denser medium. अब क्या होगा, मैंने रिवर्स कर दिया, light is now traveling from the denser medium to rarer medium. As we all know, आपको पता है मैं क्या बात करने वाला हूँ। अब यहाँ एक सर्टेन एंगल पर जब ये लाइट यहाँ फॉल करती है, तो मुझे पता है कि रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, और ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, दिस आल्सो विल बी गवर्न्ड बाय, वी स्टिल कॉल दिस एज अ स्नेल्स लॉ। अब मैंने क्या किया, ये जो लाइट को मैं यहाँ पर अलाउ कर रहा हूँ टू स्ट्राइक ऑन द सरफेस, उसका मैं एंगल चेंज करता हूँ। अब मैंने पहले वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, मैंने इसको एंगल चेंज कर दिया, उस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, इट इज ऑन द ग्रेजिंग इंसिडेंट, मींस इट इज ट्रैवलिंग ऑन द सरफेस, दिस angle of refraction now becomes 90 degree. अब यदि यहाँ से मैंने further इसको, that is this angle at which my light grazes on the surface is known as critical angle, which is for example from here, if I substitute that phi2 as 90 degree, then I get this angle which is sine inverse n2 by n1 is here, sine inverse n2 by n1. So now if I further increase the angle, now this phi1 prime, this phi1 prime is greater than critical angle. So if I increase this angle, what we learned from at the level of class 11 or 12, that there's no reflected ray, no energy in this medium, and all the energy will be reflected back. We call it total internal reflection. And here is the picture you see here. I mean, light is falling on this one, getting reflected, then this is refraction, and here is the total internal reflection. As you see, for example, and light goes away from here in this direction, and the refraction will take place over here. And here is the beautiful example. You see what is done here is, this is my prism, and the light which is striking on this surface, this angle is changed. This angle is small, this angle is kept on increasing. You see here, at this point, light is almost going to graze, and at this point, there's no reflected light, some intensity on the top of the screen, as you can see here, and it is reflected in this direction, right? So this is how we can demonstrate this total internal reflection. So the question is that, now I will be discussing a little bit more about this one, the total internal reflection. जो हमारी class, this is, I should say, this is the classical picture, that when you have an angle, ray traveling, हम ऐसे पढ़ते हैं क्लास कक्षा 11 में 12 में, एक रे है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे ट्रेवल कर रही है, वो टोटली इंटरनल, देयर वोंट बी एनी रिफ्लेक्टेड रे एंड इट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑप्टिक्स को समझने के लिए वी हैव टू गो फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो अब हम जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि अगर मैंने एक वेव को इस डायरेक्शन में अलाउ किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माय लाइट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस आई हैव अ फाइनाइट वेव हियर, एंड I know, as you can see here, there is a reflected wave here that is experimentally observed here. So there will be reflected wave. यानी कि हमारे पास इंसिडेंट वेव तो है जो मैं खुद ही बेच रहा हूँ, और रिफ्लेक्टेड भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और अब ये मैं बोल रहा हूँ कि साहब कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगी, राइट? ये ऐसा हम बोल रहे हैं। तो लेट अस कैलकुलेट इज अ रिफ्लेक्टेड रे हियर,
एंड सी अगर मैं उस रिफ्रैक्टेड रे को कैलकुलेट, जैसे हम लोग क्या करते हैं मैकेनिक्स में, हम वेलोसिटी निकालते हैं, अगर वेलोसिटी उस पार्टिकल वहां जा ही नहीं रहा तो वेलोसिटी जीरो आ जाएगी। ऐसे अगर यहाँ पे वेव हो गई तो वेव का जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल वो जीरो हो जाएगा। तो जब हम अब यहाँ पर देखें, यदि ये जो θ1 है, इफ दैट इज, तो होता क्या है जब हम इस एंगल को इंक्रीज करते हैं क्रिटिकल एंगल से। तो अगर θ1 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल कितना है, अभी निकाला हमने साइन इनवर्स n2/n1। तो इन दैट केस अगर मैं दोनों का साइन लूं तो साइन ऑफ θ1 विल बी ग्रेटर देन n2/n1, राइट? एंड n2 is here n2 and here is n1. n2 is less, n1 is larger. So that has to be understood. So this means अगर मैं यहाँ पे n1 को यहाँ ले आऊं तो n1 sin θ1 is greater than n2, right? And so now if I apply the Snell's law, n2 sin θ2 is equal to n1 sin θ1. So n2, if I divide both the sides, I'll get n1 sin θ1 by n2. But n1 sin θ1 is greater than n2. So this fraction will be greater than 1. And if this fraction will be greater than 1, then sin theta will be greater than 1. And which which is forbidden. Sin theta cannot exceed 1. So, but if my ray is traveling at an angle which is greater than critical angle, then what we learned that θ2 in this case, θ2 is the angle at which my ray is expected to be in the rarer medium. This becomes greater than 1. So what will be causality? If I calculate cosine of theta, which is 1 minus sin square theta, this becomes imaginary. As you can see here, so my cos θ2 becomes imaginary. θ2 is the angle at which my ray is expecting in the previous one. So θ2 is, okay, I have written here, okay, phi2 here. So that is, I am writing here θ2. So that has to be understood. So θ2 is the angle at which my ray is supposed to emerge in this medium, right? That becomes, in this case, imaginary. So now, as you see here, it becomes imaginary, purely imaginary quantity. So now let us try to get the mathematical expression for the electric field that I'm expecting it should be there, but format is saying, other people are saying that no, there's no field. Light is totally internally reflected. So if I have a field in this direction, that means I have a wave, and wave will be traveling in certain direction. This is the wave vector of this wave and traveling at an angle θ2. So if I write down the expression, like this is my expression for the transmitted wave. If I write down here, I'm not going, because see, this my k is in the xz plane. So k3 vector will not be having a y component. So when I have k dot r, I will be having only x and z component finite. And then I'm not going to detail here, but if I do certain mathematics, and as we have already calculated sin θ2 as this, and cos θ2 becomes imaginary. So basically, what is that? k3 का x component यहाँ पे आ जाएगा, k3 cos θ2 आ जाएगा, और ये k3 sin θ2 आ जाएगा. एंड वही sin θ2 cos θ2 की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा. अब यदि मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास एक वेव ऐसी आ, ये एक्सप्रेशन है, दैट विल लीड टू दिस एक्सप्रेशन. अब यहाँ देखें, अगर मैं इसका रियल पार्ट लेता हूँ तो ये जो e to the power I, ये जो पार्ट है e to the power I theta, this will give me sine or cosine part, and this gives me the phase of this wave. So phase is obtained from this one, and this will be the amplitude. Initial my amplitude was real, right, and it is constant. Now you see here, amplitude has a factor e to the minus beta x, and x is my this direction. That means the amplitude. So this first is that E3 does not equal to 0. As we say that total internal reflection means there's no beam, no light, no energy in this medium, right? But we got a finite. First, we got this expression of the wave here, finite. Second thing is that its amplitude decays minus xa. So decays exponentially in this direction, right? So I have a wave. This is the wave. If you see here, I think you know that for kz minus omega t, this is the wave which travels along the z direction. So this is the wave E3. This wave is traveling along the surface, but its amplitude decays along the direction normal to this one. And that is the beauty of total internal reflection, which is being, so see here, the amplitude, whatever is amplitude here, it diminishes as you go away from this one. And this amplitude is, so this amplitude is, so whatever the reason here in which this amplitude is finite is of the order of wavelength at which my light is traveling in this medium. Please understand, the magnitude of this light will be almost not negligible
over the distance along the x direction, which is of the order of wavelength. And this is the wave. A wave which travels along this direction but decays exponentially in the normal direction is known as evanescent wave, and that plays very, very important role in many devices, many science and technology applications, including the fiber optics. तो अगर मुझे इसको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हम तो बहुत सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, उसको अगर मुझे समझना है तो मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ. हमने क्या किया, हमने माना कि मेरे पास एक रे है और वो रे आके ऐसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. दिस इज माय ज्योमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन. This is my geometrical optics predicts that light has to go from here and reflect back here. But actually, we forget that this is not, my light is not pencil of ray, it's beam. It has finite extension. It has finite extension. तो होता क्या है कि ये जो लाइट है वो इस मीडियम में टनल करती है. That the light goes up to certain distance in the rarer medium, and there is a hypothetical surface over here. From there, it gets totally internally reflected, if you can say that. So that means my geometrical optics predicts that the ray or the light has to reflect from this point, concrete from this point, but actually is not. It gets shifted and reappears in this medium from this point. So this is the shift, and because it reaches in this medium, comes back, it is turning from this point, turning from this point. That means because it is reaching in this medium, that means there is some finite amount of energy available in the rarer medium, and that energy corresponds to this wave, which is known as evanescent wave. And this shift was analyzed and studied by scientists Goose and Hanshan. So this shift is known as Goose-Hanshan shift. अभी आप सोच रहे होंगे सर ने आपने क्या क्या बता दिया, इसको समझू कैसे? समझने के लिए यहाँ पे उदाहरण देता हूँ मैं आपको. What यहाँ पे आप ये what I'm showing here is that suppose this is the army which is taking a flag march, say in Jammu Kashmir border of China, India-China border or somewhere. So they are moving in this direction, and all of a sudden, so this is, and see, when army take a march, you know that they cannot change their position. They are very disciplined. They are traveling a single road. Now suppose ये जो medium यहाँ पे आया, यहाँ पे उनको पता था ये road के यहाँ पर turning यहाँ पर इस point पर, there's a difficult territory. Say कोई खाई है या कोई blast है या कोई mine लगा हुआ है, सब पता लगता है. So there's a difficult territory in this region, and now they are supposed to turn around. They are supposed to turn around. How will they turn around? This guy which is traveling here can turn back from here, but the guy which is going here, how if he turns from here, then this order will be changed, and military cannot change the order. Hence, if this march has to turn around, then this guy should go in this certain distance in here and then turn around over here. So this is, if I just layman, if in a way I explain how what is happening here, why it is going over here, then actually this is I can explain with the help of this one, that with the march past of the army, that if they have turned exactly from this point, then this guy, this will be turning from here, this guy will be turning moving little bit inside, then coming back here, so that in the reverse order, the order will not change. Means this will be first here and this will be the last. That is, this will be mirror image. Now, so this was, so that now that I say that there is finite energy over here. So what is the proof now? Question is that, well, some mathematics, and I'm saying something, you can believe it, but the question is that what is the proof that there's energy over here? So this was demonstrated by J.C. Bose here, which you have seen. What the picture you are seeing here is the picture of him taken at 1897 at Royal Institution, where he re-performed his many experiments. He was one of the greatest scientists ever, and you should know that S.N. Bose, who is credited for Bose-Einstein statistics, was his student. So I don't want to go into this one. You know that he was credited for successfully transmitting electromagnetic wave, which was he was not given. But see here, Nobel laureate Neville Mott wrote in his famous article that J.C. Bose was at least 60 years ahead of his time, and in fact he had anticipated the existence of p-type and n-type semiconductors. So why I'm talking about that? My point is that what is the proof that I have energy over here, and here is the proof. So what you do here, just focus on this one. This is my region which is having high index, and I'm allowing this ray to fall at this interface at an angle which is greater than critical angle. So that will be reflected back. Now what I'll do, I'll bring another identical medium here.
if I bring this medium here, there won't be any light here. It will be totally internally reflected. But if I manipulate this separation between these two, then what will happen? I will be observing light here. This happens because of if this distance is of the order where the evanescent wave, the energy is still finite, that energy will shake hands with the electrons over here, will excite them, and these electrons will re-radiate. So this is the in principle, this is the principle which actually tells you that yes, there is some energy over here, and that is what was demonstrated by J.C. Bose at Bose Institute, Calcutta, in 1897. He used wavelength 20 centimeter, and this was his famous experiment. He had taken a prism, and then if light is falling over here, it gets totally internally reflected. And then what he did, he brought another prism close to this one. Of course, if it is far away, there's no light here, but bringing the prism over here close to this one, the finite amount of energy was observed by this detector. So this is the famous, this is actual picture of his setup taken from Bose Institute, Calcutta. With this, he proved that the existence of evanescent wave. So this is in terms of quantum mechanics. If I take the freedom, classically this is forbidden region, right? It cannot tunnel. So this is known as tunneling effect, which can be taken into account. We can take the kind of analogy from the quantum mechanics, that if this is my potential barrier, then depending upon the particle is coming from here, classically, if there's a wall here, particle cannot cross this one. But quantum mechanically, depending on what is its height and its width, and what is the energy of the incoming particle here, it can have finite probability to tunnel over here. It tunnels over here actually. So that is what, if I can correlate, then it is known as the tunnel effect in this case here. So I think now it is already 1 hour, and so I will take maybe, I have been told that I shall be taking only 1 hour. So in that case, let me take 10 more minutes because I want to discuss now the application of total internal reflection. So question is that, so one of the field, science and technological field, where the total internal reflection plays a key role is fiber optics. And today, all the global information provider, like internet, everyone would be using, we are using right now in this lecture, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, all these service provider for the information, they all owe their success to the fiber optics. As you can see, this is a globe. An entire globe is mapped with optical fiber, and that way the entire globe is now reduced to a village, a small village, and we call it knowledge hub. Anything happens to America right now, we immediately get the instantaneous information at our news channel as a breaking news. So that is something happened to America, immediately we get the information over. This is because of fiber optics. If you ask me, the two greatest ever technological development in last century, I should say the nanotechnology and the fiber optics. Of course, there are some apart, but then from my point of view, these two are the two technological invention or evolution which has changed human life, like beyond imagination. So what happens here, classically, if I talk about, when I'm talking, that is, my mouth is a transmitter. I will be just basically talking about giving some fact of communication. So when I'm speaking, information starts from my mind, it modulates my vocal cord in my body, and when it's modulated, my vocal cord has only air column. So when it gets modulated, some kind of noise comes out from my mouth in terms of voice signal. So in this case, I am a transmitter, and because I'm speaking to my students who is in my office, so this guy is receiving, for him or her, the ear is receiver. So whatever I'm saying, this information, that information which is coming from my mouth is in terms of pressure wave. Okay, so this pressure wave travels in this medium, reaches over here, then his ear receives, and then it processes, and the information reaches to his brain or her brain. So in this case, I have a transmitter, I have a receiver, and the medium in between is the free space, and this is called the channel, communication channel, in which my information is coming from here to here. So this is the open space communication system. But suppose here I am the transmitter, means I am the speaker and the listener, both are in the same room. But now what happens if so, I mean,
When I'm speaking, the frequency of voice signal varies from 20 hertz to 4,000 hertz. So now what happens is that, the range of the frequency of audio signal is taken, this is taken as lower part is taken as 0 and highest part is taken as 4,000 hertz. So any voice signal can have the frequency only in this range. So that has, the signal has its own width, frequency width. So what happens if my listener is far away from here, then what I require as a microphone, which has a diaphragm. And this is a sensor. Diaphragm is a sensor. What happens? The pressure wave falls on this diaphragm, and diaphragm senses the pressure variation and converts it into electrical signal, analog electrical signal, which is fed into the wire and reaches over here with an amplifier. In this case, my information is fed into the wire, not in open air medium. So such mode of communication is known as guided transmission system. In this case, my communication channel is the wire, and the information reaches to many people around. So this is a situation when someone is in the Guwahati itself. I'm speaking from Guwahati, but suppose you are far away from here, then I have to use another mode of transmission. I need to apply antenna for transmitting information. As you can see here, it is fed to here using heavy duty electronics, and then the receiver which receives information. Once again, in this case, the medium is open space. So this is again open space communication system. But in all these cases, entire communication is done in electrical domain. So this is the normal configuration of communication channel. We have a transmitter, we have a receiver, and we have the channel. This channel can be wire or can be atmosphere itself. Now, the channel which I'm talking about, this wire, where I'm transmitting signal over say radio wave, or say for example here, it could be radio wave or the microwave. That is my channel here. So radio wave or the microwave has its own range of frequencies. That is, my channel offers a range of frequencies. So just analogous of that, I'm just going to explain here. My channel used to be like road on which my information is traveling, right? And information is like a bus. So larger the width of my channel, large number of bus can travel parallelly without interfering from each other, without having an accident. So this is my channel. It has its own range. The width of this road is same as in communication, it is known as width of the channel, which is of course in frequency. The channel has its own frequency. And this is my signal, which has its own frequency. As I told you that for voice signal, it is 4,000 hertz. So normally what happens, we used to inject lots of the signal onto the same road. Like, you see here 1, 2, 3, 4, 8 lane highway is here. Similarly, when our Prime Minister speaks, he talks about highway. Highway is the one where internet traffic is traveling. It is just an imitation of traffic here. So what happens here is that in general, when we are in electrical domain, the information is fed into the wire. There's a copper wire. It is twisted wire here, cable here, or it could be a couple of this wire bundled together, which we call coaxial cable. And if it is unguided one, then as I said, I can use either radio wave or the microwave as a carrier wave on which information is fed. So radio wave or the carrier or the microwave is a carrier wave. So carrier wave can be thought of as a horse, which could be horse, could be microwave or radio wave on which this man sitting on that can be treated as information. The information is traveling over this carrier wave here, the horse here. So how much is the information? I think I will take few more minutes. So let me just give you an idea about how do we quantify the information. As the best way of quantifying the information is that when everyone would be using computer. आप सभी कंप्यूटर का प्रयोग करते हो ना? आप कंप्यूटर में टाइप करते हो, जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट कोई रिपोर्ट बनानी है, आप कंप्यूटर में टाइप करते हो. तो कंप्यूटर में जितने भी अल्फाबेट हैं, पंक्चुएशन है, उन सबको एक ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, सबको एक ASCII कोड दिया जाता है. एक वो कोड होता है, कोडिंग किया, यानी ए का भी एक कोड होगा, बी का भी एक कोड होगा, कॉमा का भी एक कोड होगा, और वो कोड क्या होता है, इन बाइनरी डिजिट्स में होता है, a series of 1010, और ऐसे 7 डिजिट्स होते हैं. यानी एक ए जब आपने कंप्यूटर में प्रेस किया तो वहां पे 7 बिट्स वहां से पल्सेस निकलेंगे. आप ऐसे मान लो 7 पल्सेस निकलेंगे. दैट पल्स कुड बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 1 and 0, राइट. सो सपोज मैं आपको एक बुक देता हूं जिसके 2000 पेजेस है. मान लीजिए इसमें कोई फिगर नहीं है ना, कोई फिगर नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली 2000 पेजेस हैं, और पर पेज 50 इसमें लाइन है,
और हर लाइन में 50 करेक्टर्स यानी 60 करेक्टर्स है, अल्फाबेट्स है, कॉमा है, पंक्चुएशन है। तो जैसे मैंने बताया कि ये मेरा कंप्यूटर, मैं इसका यूज करूंगा और इसके हर जो आपके कीबोर्ड्स के जो अल्फाबेट्स, पंक्चुएशन, सिंबल्स हैं, सबके लिए एक ASCII कोड है, 7 बिट है। तो आपको इन सबको 7 से मल्टीप्लाई करिए, आपको पता चल जाएगा। जब कंप्यूटर में फाइल स्टोर करेंगे आपको पता लगता है कि ये 42 मेगाबिट है, राइट। सो दिस इज हाउ यू गेट द इंफॉर्मेशन। सिमिलरली अगर आपका VCR टेप है, आपको यूज नहीं करता है, तो VCR टेप की जो दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट इज द साइज, दिस इज द फाइल साइज। अगर इस फाइल को मुझे ट्रांसमिट करना है, यानी इतनी इंफॉर्मेशन मुझे भेजनी है, VCR टेप में इतनी इंफॉर्मेशन होती है 360 into 10⁹, दैट इज बेसिकली 360 गीगाबिट। गीगा मींस 10⁹। तो एक VCR टेप में इतनी इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं जस्ट आपको एक रफ आइडिया दिया कि हाउ डू वी कैलकुलेट इंफॉर्मेशन। अब अगर मुझे इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना नहीं, आपसे शेयर करना है, तो मुझे उसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो ट्रांसमिट करने के लिए किस डेटा रेट में ट्रांसमिट करना पड़ेगा, ये आपको बता देता हूँ। इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन। जैसे अगर मुझे एक टेलीफोन वॉइस को सेंड करना है, तो मुझे 64 पल्सेस किलो 64,000 पल्सेस पर सेकंड मुझे भेजना होगा। एक सेकंड में 64,000 पल्सेस मुझे भेजना होगा अगर मुझे टेलीफोन वॉइस चैनल अगर मुझे ट्रांसमिट करना है। अगर मुझे टीवी पिक्चर इन हाई डेफिनेशन, अगर मुझे हाई डेफिनेशन टीवी पिक्चर अगर मुझे ट्रांसमिट करनी है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो 3.73 गीगाबिट होगी, और मुझे इसको एक सेकंड में इतना गीगाबिट, मुझे 3.73 गीगाबिट मींस 3 into 10, दिस इज रफली 4 into 10⁹ पल्सेस पर सेकंड, ह्यूज अमाउंट ऑफ पल्सेस। अगर मैं अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, अभी तो आपका अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी आ गया है, तो अगर आपको अल्ट्रा हाई डेफिनेशन पिक्चर को आपको ट्रांसमिट करना है, then it will be 50 into 10⁹ pulses per second. Huge amount of information to be sent, and our computer processes at this speed. So now let's take an idea about अगर मैं इलेक्ट्रिकल एरा में हूँ, तो वहां पे मुझे कितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी मिलती, right? How much information I can send per second? So my copper wire can maximum transmit 100 megabit per second, which is capable of only transmitting 1500 phone calls, only 2 TV channels. अगर मैं आपको 2 रामायण दूं, उसको आप बोलो आप कंप्यूटर टाइप करो, तो आप 2 रामायण ट्रांसमिट कर सकते हो। अगर मेरा ट्विस्टेड पेयर है, सिंगल कॉपर वायर, ट्विस्टेड कॉपर वायर, परंतु अगर ये और ऑफ कोर्स हाई डेफिनेशन और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन विच इज 3 गीगाबिट, 15 गीगाबिट, भाई यहाँ तो मुझे 100 मेगाबिट मिल रहा है, तो 3 गीगाबिट कहाँ से भेज दूंगा। तो अगर मैं कोएक्सियल केबल ले रहा हूँ, तो इंफॉर्मेशन जो मैं भेज सकता हूँ इसके द्वारा वो बढ़ जाती है, क्योंकि कई सारे वायर्स पैरेलली अब लगे हुए वहां पे एक ही क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो मैं अराउंड 10 टाइम्स ज्यादा मैं फोन कॉल ट्रांसमिट कर सकता हूँ, 10 टाइम्स ज्यादा मैं टीवी चैनल ट्रांसमिट कर सकता हूँ, 10 टाइम्स मैं ज्यादा रामायण ट्रांसमिट कर सकता हूँ, बट स्टिल 1 gigabit I require 3 gigabit. So even electrical era is not capable of transmitting HD or US information. So the question is that how can we increase the information carrying capacity of communication channel? So I'm not going to detail information carrying capacity, that is how much information I can transmit, is proportional to the channel bandwidth, जो मैंने बताया रोड की चौड़ाई से। और जो रोड की चौड़ाई है वो डिपेंड करता है कि आप जो कैरियर फ्रीक्वेंसी वो कितनी है। और थंब रूल ये है कि चैनल की जो बैंडविड्थ होती है, यानी विड्थ होती है, फ्रीक्वेंसी विड्थ, वो 1/10 ऑफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर मैं रेडियो वेव लेता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है इन द रेंज ऑफ 10⁶ हर्ट्ज, इसका 1/10 कर देंगे तो 10⁵ हर्ट्ज आ जाएगा, दैट इज 100 किलो हर्ट्ज। सो आई कैन हैव ओनली 100 किलो हर्ट्ज मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। अगर माइक्रोवेव लेंगे तो बढ़ जाएगी, 10/10 हो जाएगी, इसका 1/10 10.9 हो जाएगा, दैट इज 1 गीगा हर्ट्ज, ओनली 1 गीगा हर्ट्ज। मैं अभी भी एचडी और यूएसडी नहीं भेज सकता। लेकिन यदि मैं मूव करूं ऑप्टिकल डोमेन में, तो वहां पर ऑप्टिकल डोमेन में जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 10/15 होता है, इसका 1/10 करेंगे तो 100 टेराहर्ट्ज। दैट इज इफ यू शिफ्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डोमेन टू ऑप्टिकल डोमेन। ये टेक्नोलॉजी है जो आपके अभी इंटरनेट में, मोबाइल में जो आप यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो, सब में ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो दैट इज इफ यू शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर, देन इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, चैनल बैंडविड्थ वो बहुत नहीं, आपकी रोड बहुत वाइड हो जाएगी। रोड वाइड हो जाएगी मतलब कि बहुत सारी कार्स पैदल जा सकते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ कार पैदल जा सकते हैं। सो हाउ कैन वी डू दैट वन, उसका थोड़ा सा बताता हूँ। ये ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रोफ डैनियल कोलेडन ने परफॉर्म किया था 1841 में। What he did is that he took a jar, made a funnel over here, filled the water here, and guided the sunlight for this one. And this was the first demonstration that light can be tracked in high index medium with the phenomenon of total internal reflection. That is a one. And this was recreated by
Tyndall in Royal Society UK, where he repeated the same experiment and showed that light can be guided over a small distance over here, which is credit was given to him, though Gulladent has put up this one earlier. This is a very fascinating experiment. I have tried to do this one for you. So what I did here, you can do. This is my water. एक पानी की जो बोतल होती है वो लिया छेद के यहाँ पर, और ये जो डॉट पेन होती है उसका जो यूजलेस डॉट पेन उसको यहाँ फिक्स कर दिया और यहाँ पे फेविक्विक उसको चिपका दिया, राइट। अब इसमें मैंने जल भर दिया और मैं आपके लिए वीडियो चलाता हूँ, हालांकि ये बहुत दिस वीडियो इज नॉट, आई डोंट नो, the video is not, I can't play the video here. So beautifully, if you do this one, I have recorded light gets totally internally reflected. You can directly see by your eyes. Well, I can't play with this one. So here is the light which travels in the glass wire, the optical fiber. So the problem with, if I have the, so what is that here? So with this examples, it was established that light can be trapped in high index medium, but water cannot be used as a channel. So it was thought that if I can replace this water jet into the cylindrical glass wire, and then in the glass, light can be allowed to travel for longer distance. That's how the fiber optics came to the picture. So if I have the glass wire, then you see here the light which is launched in this direction will be partially refracted and partially reflected. But if I increase the angle here, then this ray will be striking at this interface at this point, and this angle is greater than critical angle. Then this ray will be totally internally reflected here and will again be totally internally reflected here. But by chance, because this is bare fiber, right, bare glass. So if by chance there's some environmental fluctuation, a water drop falls on this one, then what happens? The ray, which was perfectly guided by the fiber, now energy leaks out from here. And that means the information which is traveling in the fiber is not secure. Then N.S. Kapani, Narendra Singh Kapani, who was a research scholar of Hopkins working in for his research in UK, came up with an idea that if this glass rod is covered by another glass of lower refractive index, you can imitate like pen. If we have graphite, which is central glass, high index, and this wood part, which is low index. If my central wire can be coated with another glass layer of low index, in that case, this leakage will be avoided and the information traveling in the fiber will be secure. So what happens here? He got Padma Vibhushan in 2021. So now this is my bare fiber, the glass rod, and now see what happens if I just coat another glass layer onto that one, which is less of that, because I had to satisfy total internal reflection. That means the refractive index of this glass layer has to be less than that. So now if I apply the glass drop here, this information is secure, and that is how the glass optical fiber works. So I think I should skip this part, and 1 second, I would like to. So here is the fiber looks like. It has a core. It has this is called central glass wire is called core. It has refractive index N1. Then there's its diameter is 2a. Then over to that is a cladding, which is lower refractive index, as you can see here, which is called cladding here. And then there's a 2 polymer layer here that gives its very high mechanical strength. So generally, this core diameter of this core used to be 5 to 62 micron. Just to tell you how much it is, you just touch your hair. The core of the fiber, which is used for communication, used to be diameter of this core used to be 1/10, roughly 1/10 of the diameter of human hair. So 1/10 of this 5 micron used to be something like 1/10. It is less than, the fiber used to have a dimension, 4 dimensions, sometimes less than 5 micron. So a glass wire whose diameter is less than 1/10 of diameter of human hair is the one which guides light. As you can see here, this is the taken picture where light is launched into the optical fiber and travels over. This is the fiber length of this fiber is something like, if I can remember, it is something like 15 kilometers. So light travels, light is launched from here and reaches at this end, as you can see here. So light travels across the 15-kilometer length of the optical fiber, and that is what is used for optical communication. The question is that how it is beneficial. So if I use optical fiber offers
information up to 10 terabit per second, and it has some loss. And but recent experiment has shown that the information carrying capacity of optical fiber can be increased from 10 terabit to 15, 30 terabit. Let's see how powerful it is, or what is the impact of this high information carrying capacity of optical fiber. So we have learned that the copper wire with copper wire in electrical domain, you can transmit with copper wire only these many phone calls. Let me have my there's a pointer. So only this many phone calls, this many TV channels, this many Ramayans. It has increased to 15,020. Now see what happens if, see, the maximum information carrying capacity can go up to 1,000 terabit. So if we assume that moderate information carrying capacity, 50 terabit only, which is like some 50 terabit means something 50,000 gigabit per second. In that case, I can transmit 0.78 billion phone calls. See, 15,000 to 0.78 billion, that is something like 78 crore phone calls per second. I can transmit 1 million, that is 10 lakh TV channels. And of course, 13,000 HD and 3,000 UHD video files on this fiber. And 1.2 million, that is 12 lakh Ramayans per second. That too, I have not exploited the maximum information carrying capacity of optical fiber. If I can exploit it is 1,000, but I'm 1,500, but if I use only 1,000 terabit, which is petabit here, in that case, I can transmit. Previously, I had how much? I had 7.78 billion. Now it has gone to 50 billion. That is 1,562 crore phone calls per second over single fiber. On a single fiber, single cable, I can transmit these many phone calls. I can transmit 20 millions, that is 2 crore TV channels, which is equivalent to around 2,68,000 HD videos or 67,000 ultra high definition videos, and around 29 million Ramayana per second. This is how the optical fiber has transformed the entire globe in the knowledge hub. Because understand here that the information is traveling in the glass, and information is traveling in optical domain where the velocity of light is c. In the fiber, it is c by n. There is information is traveling at the highest possible velocity. So why optical fiber? With this, I will stop. Advantages of the optical fiber is that it has large bandwidth. That is this width is very, very large. It has large information carrying capacity. You can transmit too many phone calls, too many videos, high definition videos. It has cost is very low. Signal distortion is very small because information is traveling in optical domain. Suppose you do one thing like you turn your radio on and put the radio near to the mixer or juicer in your home. When you start making juice, turn your mixer on and your radio is on, you see the disturbance there. The two signals used to interfere because here signal is traveling in fiber and optical domains. There's no possibility of interaction of the optical signal with surrounding electromagnetic signals. Fiber is very thin, hence it can be incorporated in any device, low maintenance, less expensive, and the information traveling in optical fiber is 100% secure. And here is a picture, as you can see, how the entire globe is connected with undersea water optical fiber cable. This is called submarine optical fiber cables. Every entire part of the globe is connected with. This is India over here. So this is the transatlantic and trans-Pacific submarine optical fiber cable. You see here, this is previous one was in the sea, and here it is on the earth. And here is a picture of India. These are the optical fiber cables coming from the globe, and you see the optical fiber network in India for optical communication system. So I shall stop with this because time is not time. I've already crossed, in fact, around half an hour. So I'm really sorry I could not discuss other applications of optical fiber. Just discuss about the backbone of optical fiber is the total internal reflection. And without that, it was impossible. There are two things which are very, very important, which I skip here. The glass was available in the nature since beginning.
we use the glass for photo framing. We use the glass for making the bangles for women. These glasses are very, very cheap because they are very, very lossy. So, you see, the principle that light can be captured in water jet was known almost more than 100 years. But this optical communication did not come into the picture because the glass which were available there were very heavily lossy. So then scientists at Corning, they purified the glass to reduce its loss. And once the loss was reduced, then only optical fiber came into the picture. So two things here, the reduction of the loss of the glass, as well as this total internal reflection mechanism that too made this optical communication possible, a reality. With this, I shall stop. If you have any question, you can raise now. Thank you, sir. So we have 10 more minutes for the Q&A round. If anyone has any question, you can ask. No question means. Hello, sir. Yes, yes. Sir, in the previous lecture, you said about the Fermat's principle that it is the time taken by the ray of light, the optical path is either minimum or stationary. So in our college, in the books that I have read, it is also said that it can be maximum. So any experimental way, in a experimental way that we can observe the time that take the ray of light that it takes the maximum path in optically. Yes, yes. I have, because good that you asked me, because I was thinking that the students are mainly from class 11, 12. You see, I have done here extremum, right? Actual optical path length is an extremum. Yes, right? sir. So Fermat principle of extremum path. No. Fermat principle was modified. The original Fermat principle was the least time. It was then modified. Okay. So because it was observed that light always does not take the path which is shortest in route, right? For example, if you take the paraboloidal mirror, you ask me the experiment in which the path can be not minimum. You take the paraboloidal mirror, for example. In that case, you will see that the path, actual path in which the light is traveling is the greater than the lowest path. Okay, sir. Yeah. For this one example, paraboloidal mirror, if you take that one, then you will find that the path, actual path taken by the ray is the one which is not the shorter one. But that is stationary. Means if you deviate a little bit from the actual path, the time taken by the ray will not be changing. It will be close to equilibrium. Okay. Yeah. Any other question? Yes, sir. Yeah. Okay. Just like this. सर वो जो आपने एक वेव के बारे में बताया था कि TIR होने के बाद में जो सरफेस के टू वेव्स होते हैं वेव ऊपर की तरफ जिसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है. Yes. सर जो जेसी बोस ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर जो दो प्रिज्म लिए थे उनके बीच की जो गैपिंग थी वो अप्रोक्सीमेटली क्या ऑर्डर की थी? मैं बहुत स्पष्ट आपकी वाणी नहीं सुनाई पड़ी मुझे. फिर से अपना प्रश्न. सर मैं ये कह रहा था कि जो दो प्रिज्म लेकर के बोस सर ने या जेसी बोस ने उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन दोनों के बीच की सर गैपिंग किस ऑर्डर की रही थी? अच्छा ओके. गैपिंग किस ऑर्डर की थी? हाँ ठीक है, आपने बढ़िया प्रश्न किया. देखिए यहाँ पर आपको ये ट्रांसपेरेंसी दिख रही है मेरी जेसी बोस का जो एक्सपेरिमेंट है. या तो सी जो वेवलेंथ उन्होंने यूज की थी वो 20 सेंटीमीटर थी. सो सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पे यूज करना है, राइट, जैसे मैंने बताया उसमें आपकी जो वेवलेंथ होती है वो समथिंग लाइक, अगर हम हीलियम नियॉन की बात करें लेजर की, तो 600 अराउंड 632.8 रफली हम 600 नैनोमीटर बोलते हैं, राइट. तो मैंने बताया कि ये जो एनर्जी यहाँ पर है वो इन द फिजिकल डायमेंशन ऑफ विड्थ इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, राइट. तो जो जेसी बोस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, चूंकि उन्होंने वेवलेंथ ली थी 20 सेंटीमीटर, हेंस ही हैज अ रूम to increase this distance up to something like lambda is 20,
So it can be even 5 centimeters. Yes, sir. See, actually, what I read was in one of the paper I read when he demonstrated it was 3 centimeters as an example. But तो then सर मतलब ये light basically what is done? See, you take this part away from here, so there's no energy here. You will not see any energy. Then you bring it towards this direction. Then you will at some point you will be getting small amount of energy. Then will keep on increasing. Yeah. सर मतलब इन्होंने जो लाइट वेव सर जो वेव यूज करी थी वो लाइट वेव नहीं रही है नहीं, लाइट वेव यूज नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं. ये 20 centimeter is not in the optical domain. Yeah. Yes, sir. इसलिए ऑप्टिकल डोमेन में we use this mechanism, but in that case this gap between the two medium is of the order of nanoscale. Yes, sir. Yeah. तो मतलब इन्होंने लेफ्ट साइड में कोई ट्रांसमीटर लिया होगा उस रेंज की वेव का और फिर राइट साइड में उन्होंने रिसीवर लिया होगा जिससे कि उन्होंने डिटेक्ट की. हाँ, देखो यहाँ पे ना ये एक डिटेक्टर यहाँ पर है और एक डिटेक्टर यहाँ पर है, राइट, और यहाँ पे ट्रांसमीटर है, राइट. So उन्होंने यहाँ पे इंटेंसिटी मेजर की और यहाँ पे इंटेंसिटी. This is his experiment. You see, this is his experiment. Yes. Double prism attenuator. Yeah. So we will take one more question. Anyone has any question? We will take only one question. Okay, I think there is no more question. Okay, thank you, sir. It gives me great pleasure to participate this enlightening webinar. Dr. Khijwania has shared his valuable insights and knowledge on total internal reflection and its application. Shedding lights on its significance in modern technology, through this webinar, we have gained a deeper understanding of the fundamental principles of TIR and its practical applications. I would like to extend my heartfelt thanks to Dr. Khijwania for taking the time to share his expertise with us, and to Shiksha Sopan, IAPT and NANI for organizing this insightful webinar. As students of science, I encourage you to continue exploring the fascinating world of physics and optics and to participate in NAEST 2023. NAEST provides a unique opportunity for students from classes 9 to 12, BSc and MSc, to showcase their knowledge and skills in physics. So gear up for the challenge and register for NAEST 2023. I'm confident that this platform will provide a great learning experience and a chance to showcase your talent. Once again, I congratulate all the participants for this webinar, and I look forward to seeing you on the webinar on basic working principles of some modern microscopes by Dr. Rajesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, IIT Indore, on May 6, 2023 at the same time. Thank you. Thank you very much.